Hello, everybody. Good evening, Good mom. evening, good evening, good evening. How are you guys? Just give me a minute. We'll start. I'll join from the tab. The messages are updating. Yes, Hafsa, long time. How are you doing? I was giving half-yearly examination, so I was busy there. No worries, no worries. We have finished a periodic table and we have headed to chemical bonding. And in chemical bonding also we have finished. I think we have finished Lewis model and we have finished valence bond theory, right? Yes, mom. We did the postulates of valence Yes, bonding. yes. Today we'll be we'll be learning how orbitals are overlapping, and we'll learn hybridization, and we'll also try to head towards VSCPR. Okay, And where are and other students? yes, I'm waiting for them only. Who is the third person in our class? Uh, I think it's his first class, right? Yes, ma'am. Yes. So, Musa, it's your first class. I don't know how much you have done previous chapters, but I have told you कि हमने कितना whatever we have done in the last classes and what we'll be learning today. Just okay. The messages are updating. I have just connected the internet in the tab now, so the messages are updating. It will soon. I'll soon get the link and we'll start. Okay. Yes, so basically in the last class, Atya, we have studied ki how pi bonds and sigma bonds are formed, right? Yes, mom. Yes. So, yes, any questions, Atya? No, mom. Okay. So basically, what I'm going to start today is, yes. So first we'll start. I have told you ki when S and P orbitals overlap, they form sigma bond, and when P and P overlap, they form pi bond, right? Yes, mom. Okay. Now we'll do some questions. जैसे questions exam में आते हैं. Okay, I have joined from the tab also. Just let me start this. Okay, let me change the settings. Okay, sorry for the late, guys. Yes. So basically, I have told ki postulates we have done. Let me see if anything is left after the postulates. Uh, okay. ठीक है तो postulates के बाद see this time I'm not covering typically not seeing NCRT and teaching. I I'm have teaching by a little bit yes, doubt in that chapter 2. Just one question I want to ask you. yes. Tell me. I mean, principal quantum number, is Yes. it determine the size of the atom, or is it represent the shell of the atom around the प्रिंसिपल nucleus? क्वांटम what are you saying? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, right? Yeah, ma'am. Is it determine that the size of the atom, or is it represent the shell See, of the atom? it see it's represent the shells, right? See, it has one shell, two shell, right? तो अब एक शेल है तो एटम छोटा होगा, दो शेल है तो एटम बड़ा होगा. Yes, ma'am. दोनों चीजें हो गई ना. समझ में आया? Yeah. Yes, Got ma'am. it? Yes, ma'am. It Yes, ma'am. represents the Thank you. energy level, and by the energy level we can determine the size, right? How energy level, ma'am? Energy level अब के see if we are talking about K shell, तो K shell की एनर्जी लेवल कम है, L की एनर्जी थोड़ी ज्यादा है, M की एनर्जी थोड़ी ज्यादा है, राइट? And if it is n is equals to 1, so it has less energy. N is equals to की एनर्जी ज्यादा होगी, n is equals to 3 की एनर्जी ज्यादा होगी, राइट? समझ में आया कैसे? Yes, ma'am. Because they See, have more electron like this. no. What see, if I'm saying ऐसे समझो कि stairs हैं,
वन के एक स्टेयर्स है, एक स्टेयर एल है, एक स्टेयर एम है, एक स्टेयर एन है, ठीक। नाउ इफ यू सी फ्रॉम ग्राउंड लेवल से देखो तो के इज थोड़ी छोटी हाइट पे है, एल थोड़ी और बड़ी हाइट पे है, एम थोड़ी और बड़ी हाइट पे है, राइट। तो अगर ऐसे समझो, देखो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दीज आर स्टेयर्स के एल एम एन, राइट, ये स्टेयर्स हैं। इन इफ फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल एनर्जी और ये हमारा ग्राउंड लेवल है, तो इसकी हाइट h है, इसकी हाइट थोड़ी और h है, और h1 है, इसकी हाइट h2 है, एंड इफ यू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो k की एनर्जी कम है, l की एनर्जी ज्यादा है, m की एनर्जी उससे ज्यादा है, राइट। तो ऐसे ही जैसे जैसे Okay. शेल्स न्यूक्लियस से दूर हो रहे हैं, एनर्जी बढ़ रही है, तो वन की एनर्जी कम होगी। अब देखो अगर इलेक्ट्रॉन 1s में है, राइट, अब उसको 1s से 2s में जाना है, सो विल गिव एनर्जी, राइट। इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होने के लिए 1s से 2s में जाने के लिए, फर्स्ट या फॉर एग्जांपल 1 से 2 में जाने के लिए, 1 से 2 में जाने के लिए विल गिव एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन, राइट। ये तो Yes, समझ में ma'am. आ रहा है। Understand. और टू Understand. Yes, ma'am. गॉट इट, और 2 से 1 में आने के लिए हम एनर्जी उसमें से ले लेंगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Thank you. Okay, so yes, let's start. So what I was telling was about sigma bond and pi bond. So first, let us start with sigma bond and pi bond. So sigma bond and pi bond. Sigma bond is formed by s's overlapping, right? Tick. Like for example, अगर आई एम सेइंग कि सेम एक्सिस की वो ओवरलैपिंग हो रही है, एस बॉन्ड और एस 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 की ओवरलैपिंग हो रही है, इट इज सिग्मा बॉन्ड, राइट। एस पी की साइड वाइज सॉरी हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, सो इट इज अ सिग्मा बॉन्ड। देखो एस में एस इज स्फेरिकल इन शेप, राइट, एस इज स्फेरिकल इन शेप। तो अगर दो स्फेयर्स ओवरलैपिंग कर रहे हैं, सो दे विल बी हेड ऑन ओवरलैपिंग, ऑब्वियसली, राइट। सो Yeah. जब दो s बॉन्ड्स ओवरलैप, दो s ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, सो इट ऑलवेज बी सिग्मा। एंड if one s and one p is overlapping, one s and one p is overlapping, तो s के पास तो हमेशा हेड ऑन मतलब यू कैन से हेड ऑन ओवरलैपिंग ही होगी, और p के पास अब ऑप्शन ही नहीं बचा। सी दिस इज s एंड मुसा, आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी? Okay. If we are talking about S is spherical in shape, and we are talking about P, S or P की overlapping we are talking about. So S and P will overlap head on only, right? They have no other option. तो ये भी sigma bond होगा. S is also sigma bond. SP is also sigma bond. अब P की बात करते हैं. See, P में we have PX, right? PY and uh, PZ. ठीक, we have px, py and pz. If px and px are overlapping, so they'll overlap head on only, right? But if for example more than one axes are overlapping, like px, py or pz में overlapping हो रही है, so if one of the py, right, for example ऐसे समझो, I have explained in the last class, these are the three axes of the p orbital, right, और ये दूसरा p orbital। अगर if one of the orbital या one of the axis overlaps head on, तो बाकी सारों को साइड ही करनी पड़ेगी, right? Right, Athiya? Yeah, last class में I already told you. So Yes. if px forms sigma bond, the other two bonds will be pi bond. ठीक, तो जब एक बॉन्ड होगा किसी भी कंपाउंड में, so it will be sigma bond only. But if we have more than one bond, तो एक सिग्मा होगा, बाकी सारे पाई होंगे। इसका कंसेप्ट समझ में आ गया? Okay, now let us do some examples जो 1 mark question में अक्सर पूछ लिए जाते हैं. For example, find the number of sigma bonds and pi bonds in CH4. So if I want to find out the number of sigma bonds and pi bonds in CH4, so it will be sigma bond is equals to 4, pi bonds is equals to 0, right? अच्छा, और देखते हैं. Find the number of sigma bonds and pi bonds in NH3. Sigma bond is equals to 3, pi bond is equals to 0. Find the number of pi bonds in this sigma bonds and pi bonds. अच्छा, ठीक. So 1, 2, 3,
ये OH के बीच में also we have sigma bond. 4, 1, 2, 3, 4. एक मिनट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. We have 7 sigma bond and 1 pi bond, right? So these are the types of questions will be asked. Acha, abhi since you have not studied organic chemistry, when we'll finish organic chemistry, the question will be asked like this: find the number of sigma bonds and the number of pi bonds in this particular atom. They'll not give you the structure. You yourself have to draw the structure and see the number of pi bonds and sigma bonds. For example, question will come like this: find, this is the question of NEET 2019, I think. Find the number of sigma and pi bonds in benzene. Up since when the exam will be held, we will be we have studied all the syllabus, so we'll be knowing the structure of benzene. So we ourselves have to draw the structure of benzene. What is the structure of benzene? Structure of benzene is this. Okay. Now, can you guys find out the number of sigma bonds and pi bonds in benzene? Don't forget to satisfy the valency of carbon. Carbon में जहां जहां एक्स्ट्रा कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, कार्बन कार्बन वाले बीच का बॉन्ड इज गिवन, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट गिवन. So attach hydrogen to this benzene and find the number of sigma and pi bonds and tell me the answer. Okay. Mom, 18 sigma bonds, 3 pi bonds. 18 sigma bonds and Or 3 pi bonds. okay, let us see, let us see. Okay. All of you have done the question. Can I start explaining? Musa, can you hear me? Yes, ma'am. Acha, okay. Are you comfortable in both the languages or only English? No, I'm comfortable in both the languages. Okay. So this is our structure basically, Atya. See carefully. And if I satisfy the valency of carbon, देखो यहाँ पे carbon, we have one carbon here. We have, अच्छा, organic chemistry also we have not. जहाँ जहाँ bonds में turn आता है, we have carbon at that places. Okay. So now let's satisfy the valency of carbon. If we see carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4, carbon number 5, carbon number 6. If we see carbon number 1 is making 3 bonds. So 1 will be hydrogen. Again, carbon number 2 is again making 3 bonds. एक hydrogen satisfy करेगा. Carbon number 3, 3 bonds. एक hydrogen satisfy. ऐसे ही all the carbons will be satisfied by 1 hydrogen. Now let us count the number of bonds. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये 6 तो hydrogen के हो गए. Then this one 7, 8, 9, 10, 11, 12. We have 12 sigma bonds and 3 pi bonds. Okay, Atya? Yes, ma'am. Okay. So now one more question. Find the number of sigma bonds and pi bonds in ethanoic acid. I'm drawing the structure since you have not studied organic chemistry. Ethanoic acid is basically CH3COOH. So its structure will be like this: hydrogen, 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 C double bond O, bond OH. Now find the number of sigma bonds and pi bonds in this structure. I've drawn the structure. It is very easy now. Ma'am, Mm-hmm. this is redox reaction, right? This chapter. Chemical bonding. Oh, okay. 5 We sigma are bonds.
Musa, we are studying. We have finished valence bond theory in the last class. We are just wrapping it up, and then we'll start hybridization. Yeah, okay. 5 sigma bond. No, Ma'am, Hafsa, try once again. Athia, have you done? Yes, ma'am. 7 sigma bonds and 1 pi bond. Yes, very good. We have 7 sigma bond and 1 pi bond. Athia, Hafsa, see 1, 2, 3, 4, 5, and this OH के बीच में भी तो एक bond है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and this one is sigma and one is pi. So this is 7 sigma and 1 pi, right? 7 sigma and 1 pi, okay? डोंट फॉरगेट, जहां पे बॉन्ड नहीं बना है वहां पे सिग्मा बॉन्ड ही है. OH के बीच में आई हैव नॉट ड्रॉन द बॉन्ड, इसीलिए कि टू सी कि इफ यू गाइस कैन नोटिस दिस और नॉट. ओके, दिस एक क्वेश्चन इज आई थिंक कंफर्म, ऐसा आता ही है एक क्वेश्चन, टू काउंट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स पाई बॉन्ड. हाफ नंबर में आ जाएगा या ऐसे आ जाएगा कुछ. ठीक है, सो आर वी क्लियर विद दिस? सिग्मा Ma'am, बॉन्ड्स एंड can you पाई explain बॉन्ड्स. again how to do ethanoic acid again? अच्छा, इथेनोइक एसिड. सी, इथेनोइक, एथ मींस टू कार्बन विल बी हैविंग. ओके, दिस ये हम लोग आईयूपीएस में पढ़ेंगे. 2 कार्बन होगा. इथेनोइक एसिड, ओइक एसिड का जो वो होता है फंक्शनल ग्रुप, इट हैज बॉन्ड OH. ओके, मतलब बॉन्ड COOH. दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ इथेनोइक एसिड. सो द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड इज समवhat लाइक दिस: CH, H, H, then we have carbon, double bond O, bond O, bond H. This is ethanoic acid. Okay, what I have told, whenever we have multiple bonds, remember that उसमें से एक सिग्मा होगा, बाकी रेस्ट विल बी पाई. अब ये कैसे होगा? इज दिस क्लियर कि एक सिग्मा और बाकी सब पाए कैसे होंगे? Yeah. Okay, so let us count. See, I am drawing the sigma bonds by black. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sigma, right? And यहाँ पे O में we had 2 bonds. So one of the bond will be sigma and the other will be pi. So we have 7 sigma and 1 pi. Got it, Musa? Yes, Okay. ma'am. Clear? Can we move forward? Yes, Yes. ma'am. Okay, then we have the concept of hybridization. Abhi we have what studied? We have studied the valence bond theory. In the valence bond theory, we have seen कि orbitals overlap. अच्छा, now orbitals की overlapping तो समझ में आ गई. तो to determine the geometrical shapes of polyatomic molecules. Remember, we are talking about polyatomic molecules, not of diatomic. Diatomic के लिए we'll be having other theory. Okay, तो यहाँ पे एक्सेप्शन ये होगा कि we'll not talk about O2, Cl2, O3. इन चीजों की बात नहीं करेंगे. सिमिलर एटम जो कंबाइन करें, मॉलिक्यूल्स, राइट, उनकी बात नहीं करेंगे. एंड we'll also not talk about HCl and these. We will be talking about polyatomic. Tick. Okay, so to explain the structures of polyatomic molecules, what happened, the valence bond theory was modified by Pauling, and he gave the concept of hybridization. What is hybridization? Orbitals overlap to combine a new bond. Okay, and these were called the hybrid orbitals. Acha, kaise? If S and P are overlapping, if S and P are overlapping, they'll form a new orbital which will be known as hybrid orbital, right? SP orbital. Okay, the basic definition of hybridization is this. Yes. what if they have triple bond? हाँ, अब ट्रिपल बॉन्ड तो एक सिग्मा बाकी पाए, बाकी 2 पाए. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट New this particular molecule, so this nitrogen particular also. compound, हाँ, नाइट्रोजन एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड इसकी बात कर सकते हैं. So it will be having 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma. We'll have 3 sigma and 2 pi. What I have told, multiple bonds होंगे, सिर्फ एक सिग्मा करो, बाकी सब पाए. ठीक है, एक एटम अगर मल्टीपल बॉन्ड्स बना रहा है तो उसमें एक सिग्मा होगा, बाकी दोनों पाए होंगे. ठीक.
Now, Yes, what ma'am. is hybridization? Uh, Whenever polyatomic molecules are making bond, तो उसमें क्या होता है, और atomic orbitals combine, and when they combine they form a new bond, and that bond that orbitals, the बॉन्ड विच इज मेकिंग कंबाइन होकर जो वो बॉन्ड बना रहे हैं वो एक ऑर्बिटल बनाएंगे, राइट? ओवरलैपिंग से एक ऑर्बिटल, लाइक एस और एस की ओवरलैपिंग से, एस एस नहीं, दो अलग अलग एस और पी की ओवरलैपिंग से एक नया ऑर्बिटल बना। सी, दिस इज हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्यों हाइब्रिड? क्यों है? एस और पी अलग अलग से बना है, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है? सो प्योर ऑर्बिटल्स बॉन्ड नहीं बनाते हैं, दो ऑर्बिटल्स जुड़ के बॉन्ड बनाते हैं। जो तो अनलाइक प्योर ऑर्बिटल्स, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूज्ड इन bond formation. This was the modification Pauling did in the valence bond theory. ठीक? And this phenomena is known as hybridization. Basically क्या कहते, what we can say in simple language, intermixing of orbitals. ठीक? Why? To redistribute their energies. ठीक? What did they do? Atomic orbitals combine, they intermix their energies, resulting in formation of new set of orbitals which are known as hybrid orbitals. ठीक है? अच्छा, अब hybridization को समझने के लिए first I'll give you a table, उसके बाद I'll give you a formula to calculate hybridization, and maximum number of questions will be solved by, all the question will be solved by that formula only, but NCRT में there is given a different method also, and that method will not be used in 11th में आप इसी फॉर्मूले से निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा। 12th में उस फॉर्मूले की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक? Let us start. I am drawing a table. Let me draw that table. Okay, so what I am saying we'll, whatever formula I'll give you, you'll get a number, और उस number से we'll identify कि कौन सा hybridization है। hybridization क्या है ये समझ में आया? Atomic orbitals intermix their energies and they form new atomic orbitals, they are called hybrid orbitals। कोई definition आपसे नहीं पूछ रहा hybridization की, कोई नहीं पूछ रहा कि hybridization क्या होता है, बस you should know ठीक है hybridization होता क्या है। Now let us see. If I'm saying hybridization हमारा आता है, this is a hybridization, this is a hybridization state. If you get any problem in the writing you can tell me, and this is the shape. So hybridization से हम क्या निकालते हैं? hybridization से हम shape निकालते हैं। ठीक? अच्छा, तो it will be 2 3 4 5 6। अच्छा रिमेंबर, एक ऑर्बिटल से तो हाइब्रिडाइजेशन होगा नहीं, we will need at least two orbitals. So if we are talking about two orbitals, तो it will be sp। अगर हमारा आंसर s 2 आता है तो it will be sp, और if our hybridization comes out to be sp, the shape will be linear। ठीक? अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी पहले ये टेबल देख लो, उसके बाद जब I'll give you examples and I'll give you the formula, you'll get to know it। ठीक? if our hybridization comes out to be sp3, sorry, if our hybridization number comes out to be 3, the hybridization state will be sp2। sp2 कैसे? 2p orbitals and 1s orbitals are combined। ठीक है? उसमें शेप क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। अभी each shape पे I'll give you an example and then you'll understand। उसके बाद क्या? if our hybridization number comes out to be 4, the hybridization state will be sp3 and the shape will be tetrahedral। okay, if our hybridization number comes out to be 5, sp3d का मतलब 3p orbitals, 1s orbital and 1d orbitals are intermixing, and the structure will be trigonal by pyramidal। अभी ये कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, पहले ये चार्ट बना लो, फिर I'll explain। if it comes out to be 3 sp3d2, it will be square by pyramidal। ठीक है? ये ग्राफ, ये चार्ट बना लो, फिर I'll explain कि कैसे क्या हो रहा है।
बन जाए तो बताना, फिर I'll move आगे. Now we have to make notes. No, ये I think this is not in NCRT. ये टेबल शायद NCRT में दी हुई नहीं. Let me see if it is given or not. This table is not given in NCRT. ये आपको theory के फॉर्म में दिया हुआ है. तो It's अगर आप given, इसको ma'am. Yes, दिया हुआ है this one. स्क्वायर sp3d2 sp3d2 sp3d sp That अगर दिया linear. है, हाँ अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो बना लो. डी डी ऑर्बिटल का दिया हुआ है, लीनियर और ट्रायंगुलर पेयर ये सब नहीं दिया हुआ है. यहाँ से दिया हुआ है 5 और 6 वाले का दिया हुआ है. बना लो, 2 मिनट लगेगा बस. अगर नहीं बनाना है तो मत बनाओ. Ma'am, यस. ma'am, for the VSEPR, ma'am, what's the main thing we should learn from that part? अभी वी हैव नॉट डन मूसा VSEPR, वी हैव ओनली डन VBT. अभी इसके बाद हम लोग VSEPR पढ़ेंगे. द नेक्स्ट Okay, टॉपिक इज VSEPR ओनली. ओके. okay. VSEPR में क्या होता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी. उसमें क्या होता है कि जो हमारे यू कैन से बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर हैं, उनमें रिपल्जन आ जाता है. अभी नेक्स्ट टॉपिक इज दैट ओनली. आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है. तो अभी आप यू विल गेट. ठीक. डन दिस टेबल, लेट अस स्टार्ट. सो हाइब्रिडाइजेशन के लिए आई एम गिविंग यू फॉर्मूला. द फॉर्मूला इज H इज इक्वल्स टू V प्लस M माइनस C प्लस A. अब ये क्या है? ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है. V इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. किसमें? इन सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम कौन होता है? नंबर विच इज लेस देन नंबर. ठीक. द एटम विच इज लेस देन नंबर. M क्या है? M इज नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स. ओके. number of, abhi I'll give you an example. Monovalent atom around central atom. This is not carbon, this is central atom. C. Acha, you have to minus the number of positive ion. Tick. Charge on cation. And A is the, Is it out of the syllabus? no, it is not out of the syllabus, Afza. It is in the syllabus. You will be asked to determine the hybridization of this particular thing. ओके. एक आपको कंपाउंड दे देगा, उसका हाइब्रिडेशन निकालने को बताएगा. अब एनसीईआरटी ने कैसे बताया है? एनसीईआरटी ने आपको बताया है अकॉर्डिंग टू द ओवरलैपिंग. ठीक है. आई एम गिविंग यू अ शॉर्टकट मेथड. अब इस शॉर्टकट मेथड से you'll find the answer, you'll get the number. I'll explain you that method also जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, लेकिन वो Ma'am, थोड़ा can we लॉन्ग use मेथड this है. in exam? Will you get mark? yes you can use. एग्जाम में ना you won't be given कि पूरा करके दिखाओ. आप इसको रफ में करके फाइनल आंसर लिख देना, कोई कुछ नहीं कहेगा. you'll be only asked determine the you'll be only asked determine the hybridization and shape of CO2. ठीक. तो आप डायरेक्टली लिख दोगे कि इसका हाइब्रिडेशन जो भी आता है एंड शेप ये है, तो कोई कुछ नहीं पूछ रहा. ठीक है. Now let me explain. If for first example is CO2. आप इसको इस फॉर्मूला को भी लगा दोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी. स्टैंडर्ड ये हर कोई बताता है ये फॉर्मूला. We have also done this only. ठीक है. अभी I'll explain जो एनसीईआरटी में दिया है वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे. Now CO2 के लिए what is the central atom? Carbon is the central atom, right? तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा? हाइब्रिडेशन is equals to half. How many valence electron in carbon? 4. 4. Very good. Number of monovalent atom कोई है? नहीं. We don't have. We have oxygen जो कि 2 है. So number of What monovalent is atom. monovalent? Monovalent मतलब एक atom. For example, CH3Cl. Cl is monovalent. एक है Cl. ठीक है. Ma'am, carbon is there, right? Carbon is a central Now, atom. okay. Carbon is a central atom. Hydrogen is not monovalent. Cl is monovalent. ठीक है. Okay. Number of monovalent is 0. Is there any charge? No, 0. Is there any anion पे charge? No, 0.
तो इसका H क्या आया 2। अब H2 आ रहा था तो हमारी टेबल में व्हाट इज द हाइब्रिडेशन स्टेट sp. It means the hybridation of CO2 is sp. And what was the shape? The shape of CO2 was linear. इसीलिए अभी तक whenever you have seen carbon dioxide, you have seen उसका shape like this, right? Yes, ma'am. Clear? Acha, let me give one more example. For example, we are So seeing water, right water, that H2O. H2O Due to कर that, रहे हैं कर रहे हैं. Okay Musa, no problem. Okay, water H2O. अभी आते हैं उस पे. Okay, let us start. Hydrogen. What is the central atom in water? reason, Hydrogen. No, oxygen. Central atom oxygen होगा ना? Oh, yeah, Oxygen. yeah, 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 yeah. Yes, yes. Okay. Number of valence electron in oxygen? 6, 6. Yes. Do we have any monovalent atom? No. No. Do we have any charge on cation? No. no, Do we have any charge on anion? No. So what is the hybridization state? sp. So it will come out to be 3. And 3 पे हमारा क्या आ रहा था? It is sp2, right? sp2. अच्छा, अब water में how much bond oxygen is making with hydrogen? यहाँ पे लोन पेयर की वो आ जाती है ना, यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा. लोन पेयर वाले में हमारी ये हाइब्रिडेशन स्टेट तो आ जाएगी, शेप डिफरेंट आ जाएगी. ठीक है. Okay. हाइड्रोजन का जो हम लोग देखो हाइब्रिडेशन हाइब्रिडेशन तो ऐसे ही निकलेगी वाटर की भी, बट शेप डिफरेंट हो जाएगा. शेप कैसे निकलेगा? वो निकलेगा हमें नेक्स्ट थ्योरी से, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी से. ठीक. हाइड्रोजन का अच्छा, हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर कैसा, वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ऑक्सीजन. ठीक है. ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा वाटर? सॉरी, trigonal, ट्राइगनल नहीं. ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम? 2, ऑक्सीजन 2 H H 6. We have 6. See, the atomic number of hydrogen is 6, right? तो 8. 1s2, 2s2, 2 4, 2p, 2 4, 4, right? 4 5 6 7 8. हाँ ठीक, 2p4. अब देखो हाइड्रोजन ऐसे डबल बॉन्ड बनाएगा, सॉरी. ठीक. अब देखो एक एक बॉन्ड तो बना लिया. इसके बाद देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट इन ऑक्सीजन, राइट? तो एक लोन पेयर भी आएगा ऑक्सीजन में. ऑक्सीजन सिंस ऑक्सीजन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, it will form 1 bond with both the hydrogen and 2 इलेक्ट्रॉन उसके रह जाएंगे. अब 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसकी शेप डिफरेंट हो जाएगी. इसकी शेप कैसी होगी? इसकी शेप आएगी बेंट. अब वो बेंट कैसे आएगी वो अभी हम लोग देखेंगे इन द नेक्स्ट थ्योरी. ठीक है. तो अभी हम लोग विल नॉट टेक द लोन पेयर वाले एग्जांपल, विल ओनली टेक द एग्जांपल जिसमें लोन पेयर नहीं आ रहा है. ठीक है. आप सब थोड़ा थोड़ा समझो, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली. ठीक है. तो वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ CO2. लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ BF3. BF3 में फॉर्मूला लगाते हैं. हाफ. व्हाट इज द सेंट्रल एटम इन BF3? B. B. Very good. What are the number of valence electron in boron? 3. Very good. Is there any monovalent atom in this? no, एक no, मिनट. no, मोनोवेलेंट एटम, एक मिनट. मोनोवेलेंट एटम, ये सिर्फ सॉरी, मोनोवेलेंट एटम का मैंने गलत बता दिया. मोनोवेलेंट एटम वो होते हैं जो सिंगली एग्जिस्ट है, फ्लोरीन, क्लोरीन. दीज आर मोनोवेलेंट एटम, राइट? और ऑक्सीजन O2 में एग्जिस्ट करता है तो वो बाइवेलेंट एटम हो गया. ठीक है. सॉरी, थोड़ा स्लिप हो गया माइंड से. क्लियर? मोनोवेलेंट वो होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इज मोनोवेलेंट. ऑक्सीजन इज डाइवेलेंट, राइट? कभी आप O लिखते हो कहीं पे? नहीं, आप हमेशा O2 लिखते हो. कहीं आप N लिखते हो? नहीं, आप N2 लिखते हो. तो दीज आर मोनो डाइवेलेंट. ठीक है. नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है N के. ऑक्सीजन, हाइड्रोजन H2 लिखते हैं, राइट? तो ऐसे. तो ये हो गया. व्हाट आर द नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम इन BF3? 3. 3.
Do we have any charge? No. So what will be the hybridization of this? It will be 3. 3 के लिए क्या आएगा? sp2. sp2 के लिए what was the shape? Trigonal planar. ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब एक प्लेन है उस पे ट्राइंगल है. ठीक, ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब एक प्लेन है उस पे ट्राइंगल बना हुआ है. हाउ विल आई एक्सप्लेन दिस? दिस इज माय हैंड. इसमें बीच में बोरॉन है, इसके 3 कॉर्नर्स पे फ्लोरीन है. दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर. ठीक है. अच्छा, इसको ऐसे भी ये क्या है? ये हमारा शेप बता रहा है. डॉटेड लाइन जो है What दिस is इज शेप. monovalent? I don't understand. मोनोवेलेंट एटम. एक मिनट, लेट मी गिव यू द बेसिक डेफिनेशन. आप ऐसे नहीं समझोगे. मोनोवेलेंट एटम वो होते हैं जिन जो सिंगल एग्जिस्ट कर जाएं. फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन. F2 कहीं अगर आपको फ्लोरीन लिखना है तो आप F लिख सकते हो ना, जो बॉन्ड किसी से नहीं बना रहे. राइट. O2, अगर आप O लिखोगे तो हमेशा O2 लिखते हो. कभी आप O लिखते हो डायरेक्टली? नहीं ना. तो ये होते हैं डाइवेलेंट. मोनोवेलेंट कौन हो जाएंगे? हाइड्रोजन, NaCl, Li. These are monovalent atoms. ठीक. मोनोवेलेंट एटम्स जिनकी जो सिंगल बॉन्ड बनाए किसी अदर एटम से. ठीक. किसी भी एटम से जो दूसरे एटम से सिंगल बॉन्ड बनाए, दैट इज मोनोवेलेंट एटम. क्लियर या Excuse और me, एक्सप्लेन ma'am. कर? यस. Can we have an hybridization of sp2 with double bonds? sp2 with double bonds. Okay. Yes. sp2 with double bonds. Let me think of an example. sp2 with double bonds मतलब उस पे sp2 में we'll be having sp2 with double bonds. एक मिनट. c double bond c. इसमें इसका हाइब्रिडेशन क्या है? Let me search for an example. Do you guys have an example of sp2? या बताओ, रुक जाओ. Let me think of an example, then I'll explain you that. Uh, yes, double bond. Carbon में double bond होगा तो it will be sp2. Okay, let me see. देखो. If this is example CH3 CH2 CH double bond CH. Okay. अब इसमें एक कार्बन है which is sp2. Right. Let us see कौन सा कार्बन है. If I'm talking about this carbon. ठीक. You have asked example of double bonded carbon with sp2, right? तो इस कार्बन की बात करें तो ये है H double bond C single bond C. ये इस पर्टिकुलर कार्बन की we are talking about this carbon, right? Let us see hybridization. Half. Which is central atom? C. Carbon. What is the number of valence electron in this carbon? 4. 4, yeah. Yes. How? What are the monovalent atom in this? Hydrogen. Hydrogen. And carbon is also there. Yeah. See, One hydrogen. 2. एक कार्बन एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, या ये डाइवेलेंट है. इसमें 2 बॉन्ड बने हुए हैं, राइट? Yes, ma'am. Yes. Do we have any charge? No. No. So it will be 1/2 multiplied by 6. क्या आएगा? 3. 3 पे क्या था हमारा? sp2. 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 So समझ में आ गया कैसे डबल बॉन्ड के साथ sp2 आ रहा है? G, ma'am. क्लियर? Yes, दोनों ma'am. को हफ्सा आतिया. Yes, ma'am. अभी इसके लिए I'll give you a trick. ऑर्गेनिक में ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि ये पर्टिकुलर है, इस कार्बन का वो बनाओ, तो उसके लिए भी I'll give you a trick. तो अभी ये क्लियर हो गया कि BF3 का ट्राइगोनल प्लेनर कैसे आ रहा है? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. let us move आगे. BF, I'm giving you example on all the shapes ताकि तुम लोग को shape clear हो जाए. Next is NH4 plus. ठीक. NH4 plus की बात करते हैं. Hybridization state क्या आएगा? Half. What is the number of what is the central atom in this? Hafsa, don't tell Atiya, Hafsa बताएगी. Hafsa,
What is the central atom in NH4 plus? H. No, beta. It is nitrogen. See, when you are एक compound देखो उसमें Central एक atom. trick. Sorry. I think हाँ, you want yes. to. No. Sorry. It is nitrogen. What is the number of valence electron in nitrogen? 5. 5. Very good. How many are the number of uh, monovalent atoms? 4. 4. Very good. Uh, there is a one positive charge, This so one. it minus 1, and no negative charges, right? So what will be the hybridization for this? 5 4 9 minus 1 8, right? So it will be 4. 4 के लिए क्या था हमारे पास? sp3. And what 3. was the shape for sp3? Tetrahedral. What is tetrahedral? Tetrahedral will be like this. ये और ये. This is tetrahedral. Let me draw the shape. The dotted line represents the shape, okay? Wait. This is the shape. समझ में आ रहा है कुछ? शेप कैसा है इसका? नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन नीचे हैं, 1 हाइड्रोजन ऊपर है. टेट्राहेड्रल. ओके? Ma'am, Yes. what can be the maximum number of hybridizations? In your syllabus, it is up to 6. Okay. ओके. ऑल्सो अगर आप ये फॉर्मूला लगाने के बाद योर नंबर्स कम आउट टू बी डेसिमल और फ्रैक्शन और 1, इसका मतलब आपने फॉर्मूला गलत लगाया है. हाइब्रिडेशन कैन नेवर बी डेसिमल, कैन नेवर बी फ्रैक्शन, और इट कुड नेवर बी 1. 1 के साथ हाइब्रिडेशन बनेगा ही नहीं, इंटरमिक्सिंग ही नहीं होगी, हाइब्रिडेशन ही नहीं होगा. ठीक है? तो 2 3 4 5 6 ऐसे ही कुछ नंबर आएगा. अगर एस के अलावा कुछ आ रहा है, इट मींस यू आर यूजिंग द फॉर्मूला रॉन्ग. ठीक है? Keep that in mind. ये clear हुआ NH3 Ma'am, NH4 what is plus. आज dipole moment? what? Dipole moment. That. Dipole moment अभी next topic है बेटा. Wait, What? you will get to. This topic is after that, right? Yes, after this we'll study dipole moment only. Okay. Let's move to next example I'm giving you is of SO4 minus 2. What is the central atom in this? Musa has gone. Okay, Musa will be leaving by 8:15, he said. Okay, what is the central atom in this, Hafsa? Once again, tell me. Sulfur. Sulfur. Very good. What are the number of valence electron in this in sulfur, Atia? Uh, Take your time. Don't hurry. Don't hurry. Don't hurry. 6. 6. Very good. How many are the monovalent atom in this? No monovalent atom. Sulfur is making double bonds. Okay. Then is there any positive charge in this? No. No. No, ma'am. Okay. Is there any negative charge in this? Yes, ma'am. Plus 2. What will be the hybridization number? 4. ठीक. 4 के लिए क्या था? sp3, right? Yes, 4 के लिए ma'am. sp3 था ना? 4 के लिए sp3 था. Yes. sp3 का शेप कैसा था? Tetrahedral. Let us draw tetrahedral. अब देखो, how many maximum bonds sulfur can make? 6, right? 6 valence electron 6 बना सकता है. 6 बॉन्ड बना दो पहले. ये कितने हुए? 4 5 6. अब देखो क्या होता है, माइनस चार्ज किस पे लगता है? अगर if there is an atom जो कम बॉन्ड बना रहा है, जितने उसको बनाने चाहिए थे उससे कम बना रहा है. ऑक्सीजन को कितने बनाने चाहिए थे? ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए थे. कितने बना रहा है? 1 बना रहा है. तो उस पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ये वाला ऑक्सीजन भी इट शुड फॉर्म 2 बॉन्ड्स, बट इट्स फॉर्मिंग ओनली 1 बॉन्ड, तो इसलिए नेगेटिव आ जाएगा. और अगर ज्यादा बॉन्ड बना रहा होता तो पॉजिटिव आ जाता. ठीक है? जैसे यहाँ पे देखो NH4 प्लस में
नाइट्रोजन 3 मैक्सिमम बना सकता है, लेकिन वो 4 बना रहा था, इसलिए नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। ठीक है, सो बेसिकली दिस, इसका भी शेप टेट्राहेड्रल ही आएगा। क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Hello, Mohammed. I think you are late. We were basically learning how to find hybridization. Okay. Then we Yes. have an example of PCl5. ठीक, PCl5 में again let it is a bit long क्योंकि देखो एक क्वेश्चन हाइब्रिडेशन इज कंफर्म, हाइब्रिडेशन से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग हर शेप पे एक एग्जांपल। ओके, हाफ, व्हाट इज द सेंट्रल एटम इन PCl5? Phosphorus. P. Very good. What are the number of valence electron in phosphorus? 5. 5. Very good. We have 5 monovalent atoms, no charges, it will come out to be 5. 5 के लिए what we had? We had sp3d। sp3d के लिए शेप क्या था? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब देखो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे बनता है, पहले तो ट्राइगोनल बनाओ। ट्राइगोनल इज दिस, राइट? ट्राइंगल। बाइपिरामिडल मतलब एक Cl ऊपर एक Cl नीचे। अब कैसे ये है देखो, थोड़ा समझो इसको, शेप को। दिस इज बेसिकली द प्लेन। ओके, दिस इज बेसिकली द प्लेन। एंड अब देखो यहाँ पे एक पिरामिड ऊपर बन रहा है एंड एक पिरामिड नीचे बन रहा है। सी, if this is the this is the plane, phosphorus, 3 क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन ऊपर एक क्लोरीन नीचे, तो प्लेन में एक हमारा क्या बन गया? पिरामिडल। ओके, सॉरी, ट्राइगोनल। ऊपर एक क्लोरीन है, एक पिरामिड ऊपर बन गया, नीचे एक क्लोरीन है, एक पिरामिड नीचे बन गया, इसीलिए बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, देन वी हैव नेक्स्ट, ये सबसा Pyramidal, what is that? This shape. पिरामिड ऐसे ट्राइंगल बनेगा, ऊपर एक ट्राइंगल नीचे, और एक ट्राइंगल ये रहा। देखो ये स्ट्रक्चर, सी दिस स्ट्रक्चर, पिंक वन अभी आप, ये प्लेन है, फॉस्फोरस इज इन द मिडिल, एक क्लोरीन ऊपर और एक क्लोरीन, देखो ट्राइंगल समझो, ये फॉस्फोरस, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, ये प्लेन हो गया। ठीक, अब मैंने इस प्लेन को ऐसे कर दिया, इसके ऊपर एक क्लोरीन आ गया, इसके ऊपर एक क्लोरीन आ गया। अब ये जो क्लोरीन है, ये पिरामिड तो बना रहा है 3 क्लोरीन से, और ये वाला नीचे, ये नीचे वाला 3 क्लोरीन से पिरामिड बना रहा है। अब समझ में आया? पिरामिड, पिरामिड, पिरामिड नहीं जानते? Yes, ma'am. Understood. Got it. यस, ओके। एक मिनट, let us move to an example, that is SF6। अच्छा, SF6 का you guys find out the hybridization and I'll tell you the shape. Try to find out. Six. Six के लिए what was the hybridization state? SP5. No, sp3d2। यहाँ पे चार्ट में देखो, 6 के लिए it was sp3d2। 5 कहाँ से आ जाएगा? sp में हमारे पास 3 ही ऑर्बिटल होते हैं। ओके, Okay. अच्छा, sp3d2 के लिए what was the shape? स्क्वायर बाइपिरामिडल, राइट? अच्छा, कैसे स्क्वायर बाइपिरामिडल बनेगा? सल्फर, वी हैव
this is basically square ठीक है, स्क्वायर बाय पिरामिडल। क्लियर? बाय पिरामिडल कैसे बना आपसा? Yes, ma'am. ओके, अब तो आर वी क्लियर विथ हाइब्रिडाइजेशन with the formula? Abhi I'll explain you the NCERT wala concept also. So we are clear with the hybridization. Let us now see what is lone pair. So lone pair, what is the definition of lone pair is pair of valence electron, pair of valence electron which are unbonded. Okay, the valence electrons which are not bonded to any atom, the pair of valence electrons which are not bonded, जो खाली रह गए हैं, that is valence a lone pair. For example, NH3 में देखो, how many valence electron are there in nitrogen? 5. 5. पांच, we have 5 electrons, ठीक है, 3 are bonded with hydrogen, दो बच गए, so those two are lone pair, ठीक है। Similarly with water, अब you were talking about water, water के लिए क्या होता है, valence number of valence electron in क्या था, ऑक्सीजन, it was 6, right? 6 है तो H2 O के साथ दो बॉन्ड बना लिए, तो दो तो उसमें चले गए, कितने बचे, एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन गया, तो एक इसमें गया एक इसमें गया, हाउ मेनी लेफ्ट, 4, 4 लेफ्ट, तो मतलब दो पेयर, इट मींस इट हैज 2 लोन पेयर्स, ठीक है। क्लियर? Yes, ma'am. Clear. Okay, then we have the next topic, देख, let me see what is the next topic. तो लोन पेयर क्लियर हो गया। अच्छा, why I'm explaining लोन पेयर, because अभी हम VSEPR पढ़ेंगे तो उसमें we'll get the we have to get the concept of lone pair. अच्छा, NCERT में एक टॉपिक वो है salient features of hybridization, ठीक है, what are the salient features of hybridization? Let me read out those points, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो I'll explain. The number of hybrid orbitals is equal to the number of atomic orbitals that are hybridized. अगर दो ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिड किए हैं तो we'll have 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है, दो तीन किए हैं तो we'll have 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक। क्लियर? हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। ओके, क्या मतलब? मतलब फॉर एग्जांपल इफ वी हैव हाइब्रिडाइजेशन sp2, ठीक, इट मींस इट हैज 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स, तीनों ही जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी और शेप विल बी इक्वल, ठीक। जो s है और p, जो नया हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना है, उन तीनों ही ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप इक्वल होंगी, ठीक। Also the hybrid orbitals are more effective in forming stable bond than, तो hybrid orbitals जो bonds बनाते हैं they are more stable as compared to the pure bonds, ठीक है। क्लियर? इसके बाद hybrid dash, ये कोई आपसे पूछने वाला नहीं है, बट सिंस इट वाज अ टॉपिक, तो अगर आप लोग कभी रीड करो एनसीईआरटी तो प्रॉब्लम ना हो, इसलिए, ठीक। Yes, ma'am. So, ma'am, ओके, this won't be asked in the exam directly, right? हाँ, नो 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 नो, no one will ask you the definition of hybridization, no one will ask you the salient features of hybridization, कोई नहीं पूछेगा, you will only ask find the shape, find the hybridization, nothing else. Okay, ma'am, got it. Okay, yes, okay, then we have, ठीक है, अब लेट अस सी जो एनसीईआरटी ने समझाया है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन। if we are talking about sp hybridization, sp hybridization कब आता है, जब we have 1s, it means sp का मतलब we have 1s orbital and 1p atomic orbital which are combined to form two equivalent sp orbitals, ठीक है। अच्छा, इसका we'll have a floral diagram, floral diagram कैसे बनता है इसका,
let me draw it. For example, BeCl2. BeCl2 का जो वो बनेगा ये ऐसा बनेगा, देखो ये B है, ये हमारा ये हो गया, ये, और ये बेसिकली ऐसा बनेगा, ठीक है। जो ये वाला है दैट इज S एंड बाकी वाला P, ठीक। तो ये देखो, ये सब कोई पूछने वाला नहीं है। आई एम ओनली एक्सप्लेनिंग बिकॉज इट इज गिवन इन एनसीईआरटी। इफ यू गाइस विल से आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आपसे कोई फ्लोर डायग्राम नहीं पूछेगा, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि एसपी कैसे बना या वो कैसे बना। हाँ, इस पे कैरेक्टर पूछ सकता है। इट एसपी हैज 50% एस कैरेक्टर एंड 50% पी कैरेक्टर, ठीक। और वो अभी आप आगे समझ जाओगे कैसे, ठीक है। तो डू यू गाइस वांट मी टू एक्सप्लेन ये एनसीईआरटी वाला कॉन्सेप्ट, या वो फॉर्मूले वाले से हो जाएगा क्वेश्चंस? No, I think the formulas in. हाँ, फॉर्मूला, आई आई एम सेइंग ना, फॉर्मूलाज इज इनफ, क्योंकि आपसे कोई पूछने वाला नहीं है ना कि हाउ इज एसपी ऑर्बिटल फॉर्म। आप इफ यू टेक आउट द प्रीवियस पेपर एंड सी, तो एग्जाम में बस यही पूछा गया है, फाइंड द हाइब्रिडेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। Ma'am, they'll Ma'am, ask the uh, types though, right? Gosh. यस They might ask the types, like the types of SP hybridization, SP2 and SP3, right? यस यस, वही पूछेंगे ना। फॉर एग्जांपल दे विल गिव यू फाइंड आउट द हाइब्रिडेशन ऑफ SS6 SF6, तो आप फॉर्मूला से निकालोगे, इट विल बी sp3d2 एंड यू विल टेल द शेप एंड नथिंग एल्स। What about the angle? एंगल, एंगल अभी आगे निकलेगा ना। Okay, okay. ये तो ma'am, सारे सिमेट्रिकल, दीज आर ऑल सिमेट्रिकल शेप, तो इसमें तो एंगल का कोई सीन है नहीं। एंगल अभी आगे निकलेगा जब बॉन्ड पे रिपल्जन आ जाएगा तब, ठीक है। ये सत्या। Yes, ma'am. ma'am, for my exam, I had explained the hybridization of PCl5, like the excited state, ground state, that. Uh, हाँ, तो वो अभी बता रहे हैं ना कि कैसे okay. एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, वो भी Ma'am, हम एक्सप्लेनिंग यू। यस, if the question came in 3 mark to find the hybridization, so can we use this formula will get mark? हाँ, दिस फॉर्मूला से यू विल गेट मार्क। यू सी, अभी अत्या का क्वेश्चन था, अत्या का क्वेश्चन था एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन। तो जब एक्सप्लेन द हाइब्रिडेशन आएगा तब आपको ऑर्बिटल्स बना के एक्साइटेड स्टेट दिखाना पड़ेगा। बट इफ इट इज ओनली आस्किंग फाइंड आउट द हाइब्रिडेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, तो उसमें आपको सिर्फ हाइब्रिडेशन निकालना है और शेप बताना है, ठीक है। क्लियर I will ask my school क्वेश्चन? teacher whether we use this formula or not because she has ओके actually problem with me. ओके, ठीक है। ओके ओके, लेट मी एक्सप्लेन। अच्छा ओके, तो आई एम एक्सप्लेनिंग यू द process of hybridization. I'm taking example of CH4. CH4 का hybridization क्या आएगा? Let me explain you the process. अत्या question जो था, what will be the hybridization of CH4? It will be sp3, right? Yes, ma'am. Okay. Now let us see. Carbon में what is the valence electron, जो valence shell है उसका state कैसा होगा? देखो ऐसा होगा, 2s and we have 2p, right? ऐसा कुछ होगा। अब देखो, कार्बन, हाउ मच बॉन्ड कार्बन हैज टू फॉर्म 4 bonds, राइट। हमने क्या पढ़ा था, इन ऑर्डर टू फॉर्म बॉन्ड्स in VBT, what we have said, in order to form bonds one should have vacant orbitals, vacant orbital होना चाहिए तभी तो बॉन्ड बनेगा, राइट। तो Yes, क्या ma'am. Yes, होगा, ma'am. what will happen is, ये जो S का एक इलेक्ट्रॉन है, it will get excited and get transferred to this, यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या होगा, जो नया स्टेट आएगा, it will be like this, we'll have 4 ऑर्बिटल्स जिसमें एक एक सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और ये जो हाइड्रोजन आएगा वो इसके साथ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेगा, एंड दिस विल कॉल्ड एज एक S और 3p, इट इज बी sp3, ठीक है। क्लियर? Yes, ma'am. Okay, now let me take example of Atya, PCl5, right? Yes, ma'am. Okay, what is the valence shell configuration of the PCl5? It will be 3s2 3p3, right? Yes, ma'am. Okay, तो ऐसा कुछ आएगा,
1 2 1 2 3, राइट। अच्छा, अब 3p के बाद we'll be having d ऑर्बिटल, यहाँ पे d ऑर्बिटल भी तो होगा 3d which is vacant. So what will happen, this s will get excited and get transferred into this d. अब जो हमारे पास नया ऑर्बिटल आएगा it will be like this. Basically intermixing of orbitals happening. तो ये कुछ ऐसा आएगा। अब क्या 5 Cl आएंगे, वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन देंगे एंड द बॉन्ड इज फॉर्म। ठीक है, क्लियर? Yes, और ma'am. एक्सप्लेन करूं? लेट मी टेक यू एग्जांपल ऑफ sp3 का भी एग्जांपल लेते हैं। हमने sp3d का एग्जांपल ले लिया, वी हैव टेकन sp3 का एग्जांपल। क्लियर हो गया? और एक्सप्लेन करूं हाइब्रिडाइजेशन? ये एक How are टॉपिक you इससे filling कंफर्म this है। box? हाउ This आर यू orbital, फिलिंग दिस बॉक्स? सी, this orbital. pCl5, what is the electronic configuration of phosphorus, Hafsa? Hello. 2s2. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, right? तो अब Yes, ma'am. s में how many orbitals we have? एक ही। p में कितने होते हैं? p में we have 3, तो s में तो 2 आ गए, p में we have 3 and according to Hund's rule, first पहले पेयरिंग होगी या पहले सारे ऑर्बिटल्स भरे जाएंगे? Pairing. पहले ऑर्बिटल्स भरे जाएंगे, उसके बाद पेयरिंग होगी। तो 3 में ये हो गया। अब देखो क्या Okay. होगा, डी में वी हैव वेकेंट ऑर्बिटल्स, यहाँ पे पेयरिंग कोई जरूरत नहीं थी वैसे, डी में वी हैव वेकेंट ऑर्बिटल्स। अब in order to accommodate 5 chlorine atoms, phosphorus के पास 5 खाली वो भी तो होने चाहिए पेयरिंग के लिए, राइट? पेयरिंग 5 खाली ऑर्बिटल्स भी तो होने चाहिए। डी में कोई वो नहीं है, डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। हमने वैलेंस बॉन्ड में पढ़ा था अतिया, इफ यू रिमेम्बर, कि एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होता है वेकेंट और उसमें दूसरा वाला उल्टे साइड से आके बन जाता है, राइट? हमने आई हैव गिवन यू एग्जांपल ऑफ मैग्नेट की, इफ आई एक मैग्नेट रखा हुआ है, आई हैव थ्रोन अ मैग्नेट, तो अगर सेम सेम साइड वाले भी आ जाएंगे तो वो उल्टा हो जाएगा। याद आया वो चीज? Yes, तो ma'am. इन ऑर्डर टू फॉर्म बॉन्ड एक एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऑलरेडी होना चाहिए और एक जगह खाली होनी चाहिए। तो अब क्या होगा, इसमें 5, वी डोंट हैव 5 वेकेंट ऑर्बिटल्स, तो क्या होगा, s विल गेट एक्साइटेड एंड गेट ट्रांसफर्ड इनटू दिस d एंड विल गेट अ न्यू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो कि कुछ इस तरह दिखेगा। अब इसमें इसमें क्लोरीन के 5 क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आके बॉन्ड बना लेंगे एंड विल गेट sp3d। एक s 3p और एक d ऑर्बिटल से बना हुआ है sp3d। क्लियर? ठीक है। Ma'am, these type of questions won't be asked in the exam, right? Athia had a question in her exam to explain the hybridization of PCl5 like this, so that's why I'm explaining. अभी Okay, अतिया ma'am, told but ना कि for in our exam, right? Ma'am, for I don't think CBSE में I have to look in the PYQ first, then I'll tell you. ठीक है, in the okay, next ma'am. class I'll एक बार अच्छा this time I'll surely see your PYQ and I'll update you guys. ठीक है, I have not seen the PYQ from a long time Ma'am, because I have given it very long, बहुत टाइम हो गया मुझे बोर्ड्स दिए हुए। ma'am, हाइब्रिडेशन Yes, क्लियर हो ma'am, गया? यस। ma'am, while filling the electron in orbital, that is a ground state, right? हाँ, After ग्राउंड we सेट की बात हो just, रही है, यस। that's after we जब transfer the ट्रांसफर excited वो state, right? एक्साइट हो गया, हाँ वो एक्साइट होके गया है, यस, Okay. इंटरमिक्सिंग हुई है। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। सी, फिजिक्स में इफ यू हैव सीन इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज बेसिकली वी हैव टू चार्जेस एंड दे आर केप्ट एट सम डिस्टेंस। सो उनके बीच में एक यू कैन से अभी नहीं, दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो ऑपोजिट चार्जेस हैं, कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, टू चार्जेस, टू ऑपोजिट चार्जेस केप्ट एट सम डिस्टेंस, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक, क्लियर? अब उनके बीच में जो भी इंटरेक्शन होगा दैट विल बी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट।
तो डाइपोल क्या है? टू इलेक्ट्रॉन्स केप्ट एट सम डिस्टेंस. अच्छा, इनकी इन फिजिक्स इफ यू फाइंड आउट तो ये कुछ ऐसे आता है, Q इंटू एल, वॉट एवर द चार्ज इंटू द बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, ये भी है. ठीक है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस केप्ट एट सर्टेन डिस्टेंस, दे आर डाइपोल. एंड द फिनोमिना दैट उसके बीच में हो रहा होता है, दैट इज डाइपोल मोमेंट. ठीक, डाइपोल मोमेंट क्यों निकालते हैं केमिस्ट्री में हम? वो हम पोलैरिटी निकालने के लिए करते हैं. अभी उसको भी आई एम एक्सप्लेनिंग. अभी समझ में आया डाइपोल क्या है? System of two equal and opposite charges kept at a certain distance, that is electric dipole. ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. For example, if we have hydrogen and chlorine, hydrogen में plus charge है, chlorine negative charge है, they are opposite charges, they are kept at some distance, so they'll have a dipole. ठीक? Yes, ma'am. Acha. And this particular thing mu, if you product the charge and the distance between them, it will be called as dipole moment. Clear? Okay, ma'am. ठीक है, ओके. नाउ अब इसमें तो एक डाइपोल है. फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, तो क्या है? ये नेगेटिव चार्ज है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, सो इट हैज टू डाइपोल्स, राइट? pf3 की बात करें, बोरॉन, फ्लोरीन, 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 इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इट हैज थ्री डाइपोल्स, राइट? So basically, Yes, ma'am. product of charges and a distance between them is dipole. And in chemistry, we will deal dipole like this. हमारे पास कोई mathematical questions नहीं आएंगे, ऐसे questions आएंगे. ठीक? अच्छा, dipole So, निकालते क्यों ma'am, हैं? Yes. they'll just Uh, ask how many dipoles no, there are. no, no, no. You will be asked कि which molecules are polar, which molecules are non-polar. Dipole moment से आपको ये निकालना है. Our main aim to study in chemistry Okay. is कि dipole moment is a vector quantity, and vector quantity has direction. What is the direction of the dipole? The direction of the dipole is from positive to negative. ठीक है? Okay? Yes, ma'am. Okay. Let us see some example to understand कि how questions will be asked. For example, if the question is saying find out this is this molecule polar or not? Okay, so we know hydrogen is positive, chlorine is negative. What will be the direction of dipole? It will be this on the right side. अच्छा, ये direction हो गया. Is there any other dipole which can cancel this dipole? इस quantity को cancel करने के लिए हमारे पास कोई और quantity है? नहीं. It means this compound is polar. ठीक है? Okay. Clear? अच्छा, एक example और देखते हैं. CO2. CO2 में we have this. Carbon is positive, this oxygen is negative. इसका direction देखो, from positive to negative, one direction is this and the other dipole is this. Now they देखो, Carbon is oxygen इधर positive. भी है. हाँ, Carbon is positive. BCNOF, ऑक्सीजन से ज्यादा ऑक्सीजन के कंपेयर में कार्बन इज पॉजिटिव. Oh, that way. Okay, okay. ओके, कंपैरेटिव बात कर रहे हैं ना. So now see, oxygen are identical, carbon दोनों के लिए same है. तो these two vectors, vector number 1 and vector number 2 are equal and opposite. They'll cancel each other and mu of this will be 0. So it is a non-polar molecule. ठीक? Again, let us take one more example. NH3. NH3 में हम देखें तो the structure of NH3 is this. Right? अच्छा, लोन पेयर भी तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, they will be also treated as negative. This is negative, this is इन दोनों में हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन में which is electronegative? Hydrogen, right? Sorry, nitrogen, right? Hydrogen is positive. The direction of dipole for this will be, so is and if you know a little bit of vector quantity, so इसका जो वेक्टर आएगा, एक मिनट वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया.
Are you guys, can you guys see me? Yes, Yes, ma'am. mom. Yes, okay. So, can you tell me, is this NH3 is polar or not? Yes, ma'am, it is. It is polar. Why? Because it has None direction. of, yeah. Dipole is not canceling each other, right? Ma'am, your voice is breaking. Yeah, हाँ ma'am, your वही, voice is again breaking. I'm doing a solution for that only, guys. Please give me just 1 minute. Yes, ma'am. Is it clear now? Yes, ma'am. Okay. Let me take one more example. तो व्हाट इज डायपोल मोमेंट, ये क्लियर हो गया? और कैसे निकालना है ये आपके काम की चीज। जो डायपोल मोमेंट में है और जो डायपोल है वो यही है, टू फाइंड आउट पोलैरिटी, टू फाइंड आउट इफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड इज पोलर और नॉट। ठीक है, कैसे निकालेंगे? यू विल सी द डायरेक्ट व्हाट इज, पहले तो देखो Ma'am, डायपोल this होता is क्या है। polar, right? This is polar, yes. Why this is polar? Because Because that yes, if you see the direction at of this, see ऐसे देखो, इसका डायरेक्शन इधर जा रहा है, इस वाले का 1 2 3 4, 1 का डायरेक्शन इधर जा रहा है, 3 का डायरेक्शन इधर जा रहा है, 2 and 1 are on the upside direction, so none of the vectors are getting cancelled, so this is a polar molecule. Clear? Mom, CO2 is non-polar. CO2 is non-polar. Why? Because इसके दोनों dipole they are equal and opposite direction. ठीक है? Oh, Oh, okay. So, ma'am, basically, what about BeCl2? That's non-polar. That's polar, right? BeCl2. BeCl2. What will be the structure of? First, tell me what will be the shape of BeCl2. Find out the hybridization and tell me the shape of BeCl2. Yeah, छोड़ो, shape भी छोड़ो. How many valence electron in B? 2. 2. 2. दोनों bond बना लेंगे, right? Which is more electronegative and which is less electronegative? Cl is more electronegative, right? Yes. So Yes. इसका जो दो आएगा, it will be like this. Both are in the same Oh, direction, so it is so, non-polar. no. दोनों Okay. same direction में हैं. They are not in opposite direction. They'll add up. Vectors in the same Okay. direction add up. Vectors in the opposite direction cancel each other. Then Okay. won't BCl2 be polar? It will be polar, right? That's what I am saying. Okay, okay. It is you might compare with CO2 and सी कि बी, जैसे CO2 है नॉन पोलर, वैसे BeCl2 भी नॉन पोलर, लेकिन नहीं, BeCl2 में वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का चक्कर पड़ जाता है. Okay, mom. Okay, Yes, ma'am. let us move forward. Any more example you want of polarity? BeCl3 देख लेते हैं एक. BeCl3, right? Now अब what will be the direction of dipole from Be to Cl, right? Sorry, from Cl to Bl. ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, right? अब देखो, if you guys know how to take the component of vectors, you guys know vectors कैसे solve करते हैं component लेके. देखो, इसका एक component, this one, this Mom, purple isn't वाले it का, from Cl2Be? sorry, Won't it be from chlorine to beryllium? The dipole arrow. chlorine to beryllium. Oh, sorry, sorry. Yes, this. Okay,
नाउ सी, इफ यू सी द component of this, तो इसका एक component इस साइड जाएगा, इसका एक component ऊपर जाएगा, राइट? Yes, ma'am. इसकी देखते हैं, इसका एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा, इसका एक कंपोनेंट इस साइड जाएगा। अगेन इसमें देखते हैं, इसका तो नीचे ही आएगा। नाउ सी, वी हैव ऊपर, बट दिस इज सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, दिस इज आल्सो वन ऑफ द सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, इसके सारे एंगल 120 होंगे, राइट? तो 120 की वजह से इट विल बी अ पोलर मॉलिक्यूल। लेट मी सी, BCl3, BCl3 में क्लोरीन इज Be, it is be delta positive and it will be delta negative, ठीक है? तो पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसा होगा ना, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। व्हाई इट विल बी उल्टा आ गया? BeCl2 is also right. Negative to positive. Why? नेगेटिव टू पॉजिटिव, हाँ इसमें तो यही होना चाहिए था, मैंने ये क्यों बोल दिया, एक मिनट। ये डेल्टा पॉजिटिव है, यस इट इज डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव, सो ये तो पोलर होना चाहिए। व्हाई डिड यू, सॉरी गाइस। BCl2, BCl2 में BeCl, ये तो ये भी तो 180 डिग्री आना चाहिए, 180 डिग्री में द ऑपोजिट, it will be, it must be non-polar. Mohammed, were you sure that Yeah. BeCl2 is Hmm? non-polar? I had my doubts, but I think so. It's polar though. Okay, BeCl2 is a non-polar molecule because तुमने बोला, मैंने ऐसे नहीं समझा दिया, sorry. Actually, I Yeah. had, I was busy in whole day in the internship and I had to take your classes. I थोड़ा सा, my mind is a bit busy. Okay, see, For what internship? BeCl. I had an internship in my college. See, BeCl2. Be is Oh, more doctor? electro. No, 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 not doctor. That one. See, this is basically the structure. It will be like this. It is a polar non. It is a polar molecule. Sorry, Atya, you were right. Okay. Okay. Okay, ma'am. Calm down. It's okay. Actually, I had a very I was very busy from last week. Today it's over. Then tomorrow, कल से सब सही हो जाएगा. I got up at 8 and got back home at 9:30, and from the 10 I have started taking your classes. Sorry. Clear हो गया polar and non-polar? You guys, Yes. if you guys have any Yes, ma'am. doubt इस particular topic में, I'll explain again. कोशिश करना, कोई डाउट होगा तो I'll explain, ठीक है? ऐसे ही होगा, see which is periodic table से देखना कौन electropositive है ज्यादा, कौन electronic, किस पे positive charge आएगा, किस पे negative charge आएगा. How I have seen, from if you move from beryllium to chlorine, तो पहले beryllium आएगा, तो beryllium positive होगा, chlorine negative होगा, and what will be the sign of that uh, dipole? Positive to negative, ठीक है? Okay. Okay, ma'am. क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई हमारा? पोलैरिटी क्लियर होगी। अच्छा, व्हाई डू वी फाइंड डाइपोल मोमेंट? पहले तो ये देखने के लिए कि पर्टिकुलर सॉल्वेंट में कौन सा हमारा मॉलिक्यूल सॉल्वेंट हो गया। फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर अगर पोलर है तो उसमें, वाटर नॉन पोलर है या पोलर है, उसमें पोलर ही लाइक डिजॉल्व्स लाइक, राइट? तो ये देखने के लिए वी फाइंड आउट द डाइपोल मोमेंट। क्लियर? So the application of dipole moments, we have three application, whether the substance is polar or non-polar, and we can check its solubility in different molecules. Polar dissolves polar, non-polar dissolves non-polar. Also, it predicts the shape of the molecule. Shape of the molecule भी predict करता है। इसका एक NCERT में question है। I'll take the question, जब chapter finish होगा हम लोग question करेंगे, तो I'll make you remember कि हमने जब dipole पढ़ा था तो dipole से हम लोग shape कैसे निकालते हैं, ठीक है? Yes, ma'am. क्लियर? या लेट मी यहीं पे समझा देते हैं। देखो, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है आई थिंक ऐसे करके कि वी हैव CO2 मॉलिक्यूल एंड इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल,
Yeah, it is a it is a non-polar molecule. Find the shape of. Now if you see, if the question is saying कि it is a non-polar molecule, it means उसके जो वेक्टर होंगे वो ऑपोजिट साइंस में होंगे, राइट? तो इसका मतलब इसका जो डाइपोल होगा वो ऐसा होगा, इसका मतलब इसका शेप लीनियर है। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन है बस एनसीईआरटी में कि डाइपोल से वी हैव टू फाइंड आउट द शेप। ठीक, ये समझ में आया कैसे निकाला? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? Ma'am, opposite direction cancel, right? हाँ, ऑपोजिट डायरेक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट। देखो डाइपोल कब आएगा? जब इक्वल चार्जेस होंगे, तो इक्वलिटी की तो हमें बात करनी ही नहीं है। ऑपोजिट होंगे तो दे विल कैंसिल, एंड इफ दे आर इन सेम साइड दे विल एड अप। ठीक है, जैसे लेट मी टेक वन एग्जांपल, जैसे कि अगर हम देखें, अगर कोई ऐसा हो हमारा BCNOF OF2, अगर OF2 बनाते हैं एक, तो ये पॉजिटिव है। अब मान लो एक एक कोई कंपाउंड है OF2 फॉर एग्जांपल, अभी मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है कोई ऐसा एग्जांपल। अगर मान लो OF2 है, तो OF2 में विच इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड विच इज, कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा? फ्लोरीन विल बी पॉजिटिव, ऑक्सीजन विल बी नेगेटिव, राइट? फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो OF ऐसा बनेगा, ये पॉजिटिव, इसमें भी तो कैंसिल ही हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, लेट मी थिंक ऑफ एन एग्जांपल, अभी आई विल थिंक ऑफ एंड एक्सप्लेन यू कि अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो कैसे दे एड अप। ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग एन एग्जांपल। लेट मी सी इफ एनसीईआरटी में कोई एग्जांपल है पोलैरिटी पे। Ma'am, BeF2 can take, right? BeF2, देखो तो वही BCl2 वाला थिंग हो जाएगा ना, क्लोरीन फ्लोरीन एक ही चीज तो है। नहीं, लेट मी सी एनसीईआरटी में कोई एग्जांपल दिया हुआ है ऐसा। एक मिनट बस मुझे दो, डाइपोल मोमेंट यहाँ पे है। हाँ, लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ H2O। देखो H2O में क्या होता है, वी हैव हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, ये लोन पेयर है, तो ये इस साइड आ रहा है, ये इस साइड आ रहा है, बोथ द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल आर इन द सेम डायरेक्शन, तो इसलिए ये एड अप हो जाएंगे। ठीक है, और BeF2 देखो, BeF2 में ये BE है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो इट विल गेट कैंसिल। ठीक, Yes, ma'am. क्लियर? एक और एग्जांपल देते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत अच्छा है। BeF3 क्या होगा? BeF3 कुछ ऐसा होगा, क्या होगा इसमें? कैसा बनेगा हमारा डायरेक्शन? डायरेक्शन विल गो लाइक दिस, फ्रॉम बेरिलियम टुवर्ड्स फ्लोरीन, फ्रॉम बेरिलियम टुवर्ड्स फ्लोरीन, फ्रॉम बेरिलियम टुवर्ड्स फ्लोरीन। अब देखो क्या हो रहा है, इफ यू टेक कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट, तो एक कंपोनेंट इसका ऊपर जाएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, राइट? कंपोनेंट लेना आता है सबको, फिजिक्स में पढ़ा होगा वेक्टर का कंपोनेंट। Are you guys able to take the are you guys known to take the component of vector quantity? So, Yes, like ma'am. if we have any, ऐसे एक डायरेक्शन पे होता है तो एक उसका एक्स एक्सिस में जाता है, एक वाई एक्सिस में जाता है, क्लियर है ना? ये वही चीज है। तो Yes, हम लोग ma'am. लैपोल का एक कंपोनेंट ऊपर गया, एक कंपोनेंट नीचे गया। अब देखो सेकंड वाले का इफ आई एम सेइंग, तो उसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा एंड वन कंपोनेंट विल कम आउट ऑन दिस साइड। अब देखो क्या हो रहा है, ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा, ये वाला जो एक कंपोनेंट है वो इधर वाले डाइपोल को कैंसिल कर देगा। वी आर लेफ्ट विद दिस पर्पल वाला dipole. Since all the dipoles are not cancelled out by each other, so BeF3 is a polar molecule. ठीक है, ऐसे मतलब थोड़ा सा ऐसे तुम्हें स्ट्रक्चर बना के डायरेक्शन बना के निकालना पड़ेगा। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, ठीक है, ठीक है, तो बॉन्ड इसके बाद वी हैव एक छोटा सा टॉपिक दैट इज फजान्स रूल। फजान्स रूल से क्या होता है? फजान रूल देखो, जैसे हमने अभी पढ़ा कि बेसिकली डाइपोल हो कह रहा है। देखो अगर हम बात करें HCl की, तो HCl में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, राइट? क्या होता है, Cl अपना इलेक्ट्रॉन लाता है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लाता है, दोनों की शेयरिंग होती है, राइट? लेकिन असल में डाइपोल क्यों क्रिएट हो रहा है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में?
क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो हमारा ये वाला शेयरिंग वाली चीज है ना, इट इज अ बिट शिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन, इसलिए थोड़ा सा हमें लगता है कि थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर आ रहा है, ठीक, लेकिन ऐसा होता नहीं है, थोड़ा सा लगता है। देखो एग्जांपल है, समझो कि दो लोग हैं, दोनों ने सोचा कि वील शेयर समथिंग, अच्छा हम कुछ शेयर करते हैं। अब उन्होंने कहा कि हम शेयर करते हैं, तो उसको एक थोड़ा एज में बड़ा है, एक थोड़ा एज में छोटा है, तो अब वो क्या कर रहे हैं, तो जो बड़े एज वाला है उसने कहा मुझे एक्सपीरियंस ज्यादा है, जो भी हम शेयर कर रहे हैं उसको मेरी तरफ छिपाओ ताकि हम देखते रहेंगे वो चीज गायब ना हो। तो इसी ऐसे ही होता है कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्या होता है, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो शेयरिंग होती है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाती है, लेकिन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होने से बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कोवेलेंट ही रहता है, ठीक। तो ये बेसिकली थोड़ा सा डाइपोल का बैकग्राउंड है जो आपको जानना ऐसे जरूरी नहीं है, बट लेकिन क्योंकि ये ऐसा होता है बैकग्राउंड, तो आई एम टेलिंग यू, ठीक। अब फजांस रूल में क्या होता है, जो हमारे आयनिक बॉन्ड होते हैं उसमें थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर भी है, तो फजांस रूल से वी बेसिकली डिसाइड द आयनिक कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक बॉन्ड, ठीक। अब फजांस रूल क्या होता है, कैसा होता है, दिस विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। Mom, Okay. what about resonance structures? रेजोनेंस स्ट्रक्चर अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये आई थिंक दिस टॉपिक इज आफ्टर वैलेंस, वीएससीपीआर के बाद है शायद ये, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर, Okay, okay, mom. okay, सब no none of the topic will be left, don't worry about that, I'm just teaching in that way कि अगर आगे किसी टॉपिक का काम हो तो वो पीछे वाला छूट ना जाए, इसलिए, ठीक, डोंट वरी अबाउट दैट। आफ्टर दिस वील स्टडी वीएससीपीआर, उसके बाद एमओटी, उसके बाद रेजोनेंस, ठीक है, उसके बाद दो थोड़े से थ्योरेटिकल टॉपिक एंड दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड। आज की क्लास वाज अ बिट हरी क्योंकि आई हैड नॉट रेड द टॉपिक बिफोर टीचिंग। अगली क्लास में आई ऑलवेज रीड कि क्या आगे क्या आज क्या पढ़ाना है, वो आज मेरे से हो नहीं पाया क्योंकि आई वाज अ बिट बिजी, बट आई टेक केयर इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। Mom. Okay, ma'am. अच्छा, एनी आई अपडेट द होमवर्क, नन ऑफ यू आर बिजी राइट, तो होमवर्क सब लोग कर लेना। एंड if you Atya, last homework, did I give you any homework in the last class? Oh, yes, mom. I got it for lowest structure, and there's Yes, one more. you I have didn't one do that. doubt. Acha, No, you I don't have do that. one more homework, yeah. Okay, okay, so if you have any doubt in particular homework तो उस अगले क्लास में we'll discuss that, ठीक है। तो आज आज I'll give you homework on two topics, that is on dipole moment and on hybridization, okay, do that homework, and if you get any problem in any of the topic we'll discuss in the next class. Any question we'll discuss in the next class, ठीक है। Yes, My ma'am. aim was to start VSCPR also, but थोड़ा सा लेट हो गया समझाने में, we'll start in the next class, okay, thank you guys। Thank Ma'am, you, I have a mom. doubt. Yes, 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 Mohammed. Ma'am, for valence one theory, actually, I missed that class. So, what is important in Uh-huh. that part? Valence bond theory का I gave some postulates which I think will be written on here. Valence bond theory basically क्या बताता है, देखो वो बताता है कि दो एटम्स कंबाइन कैसे करते हैं, ठीक। अब ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल लेट मी सी इफ आई हैव दैट थिंग, एक मिनट, I have made Atya write all the postulates. Yeah, there were certain postulates for valence bond theory, एंड बेसिकली व्हाट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे व्हाटएवर एटम्स वी हैव दे कंबाइन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करते हैं। कैसे शेयर करते हैं, इन ऑर्डर टू शेयर दैट इलेक्ट्रॉन उनके जो वैलेंस शेल है वो खाली होना चाहिए। खाली कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल यार वो पोस्टुलेट जो मैंने लिखे थे ना उससे बहुत इजिली आई कैन अंडरस्टैंड, आई एम नॉट गेटिंग दैट नोट्स। Ma'am, these notes will be provided all in the portal, right? No, those were my personal notes. I made it, तुम लोग को पढ़ाने से पहले फर्स्ट आई रीड इट एंड आई मेक नोट्स, देन आई टीच यू गाइस, Oh, ताकि इट गेट्स इजी। आई क्विकली रीड कितना पढ़ाना है, उसके बाद आई मेक नोट्स ताकि सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊं। देखो इफ आई स्टार्ट रीडिंग एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें बहुत सारी फालतू चीजें भी लिखी हुई हैं, तो आई ओनली टेक द स्पेसिफिक थिंग्स एंड एक्सप्लेन टू यू गाइस। अब उसका नोट्स मुझे मिल नहीं रहा है, आई इन द नेक्स्ट क्लास सादिक आई गेट दोज नोट्स एंड एक्सप्लेन यू, 5 मिनट का काम है, आई एक्सप्लेन यू द होल वीबीटी, ओके। मैंने बहुत जल्दी yes, पढ़ लिया ma'am. था दिया Well, राइट, बहुत जल्दी हमने वीबीटी खत्म कर ली थी।
5 postulates थे, 5 postulates explain किए थे और वो clear हो गए थे. I'll explain you all in the next class again. ठीक है? Yes, ma'am. That will be very helpful. Okay. Okay, guys. Thank you. See you in the next class. And sorry for today's class, whatever that happened. It's okay, No, ma'am. it's okay. Thank you, But all mom. the notes will be provided in the portal anyway, right? So I can just go through it. Okay, okay. I'll ask Saurabh sir to provide you all notes. Okay. And in the next class, I'll make a separate sheet for all you guys. Okay. Yes, ma'am. Chalo. Thank you, ma'am. Okay. Okay. Bye, ma'am. Thank you. Bye bye.